इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। अद्य छत्तीसगढ़े द्वयोः भिन्नघटनयोः 30 माओवादिनः मारिताः। पंजाबस्य आरक्षिबलेन शम्भू खरौरी सीमाभ्यां विरोधं कुर्वन्तः कृषकाः निष्कासिताः। मार्ग अवरोधकानि अपि हरियाणा आरक्षकैः निष्कासनीयाः। उत्तराखण्डे चारधाम यात्रायै पञ्जीकरणं प्रारब्धमस्ति। अद्य नवरोज उत पारशी नववर्षः आचर्यते। अपि च बीसीसीआई इति भारत क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन अद्य 25+200 तमवर्षस्य आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां विजयानन्तरं भारतीय दलाय 58 कोटि रूप्यकाणां पुरस्कारस्य घोषणा कृता। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य छत्तीसगढ़े द्वयोः भिन्नघटनयोः 30 माओवादिनः मारिताः। माओवादिभिः सह जाते संघर्षे जनपद रिजर्व आरक्षिबलस्य एकः आरक्षकः अपि दिवङ्गतः। बीजापुर दन्तेवाड़ा जनपदयोः सीमाक्षेत्रे स्थितेषु वनेषु माओवादिनः उपस्थिताः सन्ति इति गुप्तसूचनाः सुरक्षासेनां प्राप्तानि आसन्। इमां गुप्तसूचनाम् अनुसरन् सुरक्षासेनानां संयुक्तदलेन अन्वेषणकार्यम् आरब्धम्। अद्य प्रातः कालात् गंगालूर क्षेत्रे सुरक्षासेनानां माओवादिनां च मध्ये गोलिकाप्रहारः जातः। अधुना यावत् 26 माओवादिनां शरीराणि प्राप्तानि सन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे अन्वेषणकार्यम् अधुनापि प्रचलति। छत्तीसगढ़स्य कांकेर जनपदे अन्यस्मिन् अभियाने सुरक्षासेनानां माओवादिनां च मध्ये गोलिकाप्रहारेण 4 माओवादिनः मारिताः। पंजाबस्य आरक्षिबलेन शम्भू खनौरी सीमाभ्यां विरोधं कुर्वन्तः कृषकाः निष्कासिताः। पंजाबस्य आरक्षकैः मार्गस्य निर्मूलनार्थं शम्भू सीमायाम् अवशिष्टानि अस्थायि निर्माणानि ध्वंसं कर्तुं च पुनः कार्यम् आरब्धम्। पंजाबस्य कृषकाणां दिल्लीं प्रति गमनं निवारयितुं स्थापितानि मार्ग अवरोधकानि अपि हरियाणा आरक्षकैः निष्कासनीयाः। उत्तराखण्डे चारधाम यात्रायै पञ्जीकरणं प्रारब्धमस्ति। अस्मिन् वर्षे पञ्जीकरणम् आधार प्रमाणीकृतं भविष्यति। पञ्जीकरणकाले श्रद्धालवः स्वस्य आधारपत्राणां विवरणं दातव्यं भविष्यति। ध्यातव्यं वर्तते यत् आहत्य 60% पञ्जीकरणम् आभासीय माध्यमेन भविष्यति, येन तीर्थयात्रिणां कापि समस्या न भवेत्। एतस्याः प्रक्रियायाः सुगमतायै हरिद्वारं ऋषिकेशं च समेत्य समस्त यात्रामार्गेषु पञ्जीकरण केन्द्राणां संख्या वर्धिता भविष्यति। तीर्थयात्रिणां रजिस्ट्रेशन इत्यस्य नूतने अन्तर्जाल क्षेत्रे आभासीय माध्यमेन पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। भक्तानां सौविध्याय पर्यटन विभागेन अस्मिन् वर्षे यात्रायाः 40 दिवसात् पूर्वम् इयं पञ्जीकरण प्रक्रिया समारब्धा। अद्य नवरोज उत पारसी नववर्षः आचर्यते। पारसी समुदायेन व्यापक स्तरे पर्व एतत् शान्ति समृद्धेः प्रतीकत्वेन परिपाल्यते। उत्सवस्य अतिरिक्तं नवरोजः पश्चात्तापस्य दिवसः अपि अस्ति। मनः स्वच्छं शुद्धं च कर्तुम् अथ प्रेम्णः शान्त्यै च नूतनवर्षस्य आरम्भं कर्तुं च अयं दिवसो वर्तते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनानाम् अभिवादनं कृतवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अद्य राष्ट्रपति भवनस्य अमृतोद्याने उद्यमोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मन्त्रालयेन क्रियते। उद्यमोत्सवः उद्देश्यं देशस्य रिक्थं नागरिकानां समीपे आनय अथ च
सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमं सशक्तीकरणं प्रोत्साहनं च वर्तते। अस्य मासस्य 30 दिनाङ्के तस्य समाप्तिः भविष्यति। लोकसभा विधानसभा क्षेत्रयोः प्रस्तावित परिसीमन विषयम् आलक्ष्य डीएमके दलस्य अथ अन्य विपक्षे सांसदानां च विरोधस्य अनन्तरं संसदः उभे सदने दिवसपर्यन्तं यावत् स्थगिते। लोकसभायाम् अपराह्ने 2 वादने द्वितीय स्थगनस्य अनन्तरं यदा सदनोपवेशनं जातं तदा सदनं दिवसपर्यन्तं यावत् स्थगितम्, यतः डीएमके दलस्य सदस्याः पुनः प्रस्तावित परिसीमन विषये विरोध प्रदर्शनं प्रारब्धवन्तः। कोलाहलकारणेन सदनम् आदिवसं यावत् स्थगितम्। कृषि कृषक कल्याण राज्यमन्त्री भागीरथ चौधरी अद्य उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनं कृषकाणां कल्याणाय प्रतिबद्धमस्ति, तथा च अनेन 14,200 तमात् वर्षात् अस्मिन् क्षेत्रे नैके पदक्षेपाः अपि उत्थापिताः। संसदः बहिः वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् श्री चौधरी उक्तवान् यत् प्रशासनेन पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्रचालिता, तथा च सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिः कृता। 2014 से लेकर अब तक किसान सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, कृषि बजट को बढ़ावा देने की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड जो अभी 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय किए हैं, परंतु ये विपक्ष कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए, इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे और इस देश के अन्नदाता को समृद्ध और खुशहाल करेंगे। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी आरोपितवान् यत् डीएमके दलं तमिलनाडु राज्ये स्वस्य असफलताम् आच्छादयितुं संसदि परिसीमन इति विषयम् उत्थापयति। संसदः बहिः वार्ताहरैः सह वार्तां कुर्वन् श्री जोशी अवदत् यत् केन्द्र प्रशासनं दक्षिण भारते अन्यायं न अनुमन्यते। जनगणनायाः अनन्तरं परिसीमन प्रक्रिया आरभ्यते इति। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का कानून के लिए पार्लियामेंट में आएगा और ऑनरेबल होम मिनिस्टर विथ ऑल रिस्पांसिबिलिटी एंड सेंसिटिवनेस ही हैज टोल्ड वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग इनजस्टिस टू हैपन फॉर द सदर्न इंडिया। अत्रान्तरे दलस्य सांसदः कनिमोझी करुणानिधिः अवदत् यत् दलं निष्पक्ष परिसीमनस्य आग्रहं करोतीति। केन्द्रीय युव कार्यक्रम खेल मन्त्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्याम् इंदिरा गांधी क्रीडाङ्गणे खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्यस्य द्वितीय संस्करणस्य उद्घाटनम् अकरोत्। राष्ट्रिय राजधान्यां 3 स्थलेषु क्रीडामन्त्री उक्तवान् यत् खेलो इंडिया कार्यक्रमान्तर्गतं भारते क्रीडा पारिस्थितिकी तन्त्रं तीव्रतया विकसितं भवति, तथा च क्रीडकानां प्रदर्शने महत्वपूर्ण परिष्कारः भवति। असौ कथितवान् यत् पेरिस नगरे आयोजितायां गत पैरालम्पिक प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकाः 29 पदकानि विजित्य असाधारण प्रदर्शनं कृतवन्तः। असौ अस्य वर्षस्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भागग्रहीतेभ्यः क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेक्टर में अपनी महत्व की भूमिका अदा कर रहा है। सभी कंपटीशन खेलो इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे देश में आगे बढ़ रही है। नहीं केवल गेम्स आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे एथलीट्स अपने कौशल्य के आधार पर अपना स्वयं का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जब हौसला बुलंद होता है, दिशा सही होती है, एफर्ट सही होता है, तो आउटपुट आके ही रहता है। अयं कार्यक्रमः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् दिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। बीसीसीआई इति भारत क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन अद्य 25,200 तमवर्षस्य आईसीसी चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां विजयानन्तरं भारतीय दलाय 58 कोटिरूप्यकाणां पुरस्कारस्य घोषणा कृता इति वार्ताः।